Bismillahirrahmanirrahim. I am your host Hamza Anwar and you are watching Computer Education Pakistan. Today we are going to do the part 4 of Unit 4 Media and its Importance from the book English Language for Grade 9 Balochistan Textbook Board Quetta. In this part we are going to do the part 4 of its word meanings and translation. So let's start. Public opinion, लोगों की राय. Give voice to का इजहार. Articles यानी मज़ामीन. Daily रोजनामा. Ablest mean قابل तरीन लोग. Influence रसोख. Thoughts खयालात. Feelings एहसासात. Masses अवाम. Showdown का इजहार करते हैं. Grievances शिकायत. Express इजहार करना. Measures का मतलब इकदामात. Performs अंजाम देता है. Same function वही किरदार. Faster तेजतरین. Convincing قائل करना, قابل यकीन बनाना. The TV and newspaper form public opinion and give voice to it. TV और अखबार अवाम की राय बनाते हैं और उसका इजहार कर देते हैं. The leading articles in the daily newspapers are written by some of the ablest men in the country and they influence the thoughts and feelings of the masses. रोजनामा के अहम मज़ामीन मुल्क के कुछ काबिल आदमी लिखते हैं और वो अवाम के खयालात और जज्बात को मुतासर करते हैं. People may show down their grievances and express their views about any governmental measures. लोग अपने शिकायत सामने ला सकते हैं और किसी भी हुकूमत इकदामात के बारे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं. The TV performs the same function as the newspapers do but is faster and more convincing than newspapers. TV वही किरदार अदा करता है जो अखबारात करते हैं लेकिन ये अखबारों की निस्बत तेज़ और काबिल यकीन है. So that's it for today's lesson. Subscribe to our channel Computer Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notifications. And also like our Facebook page Computer Education Pakistan. Allah Hafiz.